हाय एवरीवन। आज से हम लोग एक फ्राइडे को सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट मेजर एंड माइनर एक्ट्स के एमसीक्यूज एंड इसमें सारी एक्ट्स इंक्लूडेड होंगी। ये सारे स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा एंड देयर बी 20 एमसीक्यूज एवरी फ्राइडे और इसे आप मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं at 3 PM exclusively on YouTube. I am Unnati Srivastava, done my master's in law from LU Delhi. I've also qualified NET in 2020. बाकी information आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं. Before we begin the session, please like and share the session and press the bell icon so that you do not miss any notification. आप Unacademy से जुड़ सकते हैं और अपने सारे ही state exams की preparation कर रहे हैं. Unacademy टाइम एंड अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छी चीजें लेके आ रहा है. सो आप जरूर अनअकैडमी से जुड़िए एंड आप कोई भी फ्री प्लान अनलॉक करना चाहते हैं अनअकैडमी का तो आप यूज कर सकते हैं कोड उन्नति लाइव. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ ये आ रहा है अनबॉक्स 2021 विच इज 6 months फ्री आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है ऑन परचेजिंग अ प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year और अबव. अगर आप 1 year और अबव का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेते हैं तो आपको उसमें 6 महीने फ्री मिलेगा. दिस इज ओनली वैलिड फॉर 1 day. सो आपको ये जल्दी करना चाहिए एंड ऑल्सो आप इसको आज रात के 12 बजे तक कर सकते हैं और आप कोड यूज करिए इसके लिए उन्नति लाइव. So this is what which is extremely special आपके लिए जो अनअकैडमी ऑफर लेके आया है एंड हमारे पास स्पेशल प्राइसिंग है जो 9 दिसंबर टू 15 दिसंबर के लिए है. वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज स्पेशल प्राइस, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको यहाँ पे मिलेगा. सो यू कैन ऑल्सो अवेल दीज प्राइसेस. वी ऑल्सो हैव अ जुडिशरी मेंस लिंकिंग बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 15 से. इसके लिए आप उन्नति लाइव कोड का यूज करके आपको मिल जाएगा इसमें एडिशनल 10% डिस्काउंट और इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए आपको क्योंकि अब आपको मेंस की ही मेजर प्रिपरेशन करनी है फॉर 2 states दैट इज हरियाणा एंड राजस्थान. सो यू मस्ट रश एंड जॉइन दिस बैच. आप 15 दिसंबर को ये स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज गुड टाइम. आज 10th है, आप इसको ज्वाइन करें. बाकी देयर आर अदर बैचेस. मेरे 2 बैचेस चलते हैं, योद्धा बैच और प्रेपरेटरी बैच, जिसको भी आप देख सकते हैं, जिनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. देन वी ऑल्सो हैव जुडिशरी आइकॉनिक. इसमें आपको मिलेगी लाइव मेंटोरशिप, आपको मिलेगी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस. तो ये अगेन आप इस चीज को देख सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए. सो दिस इज फॉर यू. देन लेट मी टॉक अबाउट द स्पेशल क्लासेस जो हर दिन अनअकैडमी पे कंडक्ट होती हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 4 सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये क्लासेस का सारा जो नोटिफिकेशन आपको है वो टेलीग्राम चैनल पे मिलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी क्लासेस की. एंड ऑल्सो आपको अगर मेरी प्रोफाइल का लिंक चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे भी आपको जहां से सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी. Also, these are the regular mock tests which are available on Unacademy on all the core subjects. आप देख सकते हैं. आप अपने सारे mock tests मेरे साथ भी कर सकते हैं. जैसे कि आज हम लोग फ्राइडे को ये मिक्स बैग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. We will be doing सैटरडे को every Saturday on Unacademy's platform either at 11 AM और on 6 PM. हम लोग फिर से ऐसी मिक्स बैग सीरीज को करेंगे जो आपका एक कहते हैं वीकली टेस्ट तरह से होता जाएगा. सो दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग. और अगर आप उन्नति लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. सो यू मस्ट यूज द कोड उन्नति लाइव. इसको यूज करना मत भूलिएगा, चाहे आप कोई फ्री प्लान को अनलॉक कर रहे हो या फिर आप कुछ you are taking any subscription. So this code will be useful everywhere. Now this is our YouTube channel. इस पे मैं लाइव होती हूँ 3 PM पे on every Monday, Tuesday, Thursday and Friday. Wednesday, Saturday, Sunday कोई क्लास नहीं होती है. So MTTF is the हमारा दिन है जो हम करते हैं. वी आर ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ फ्यू सब्जेक्ट स्पेसिफिकली. हम लोग जो लोग अपने अभी लॉ कर रहे हैं उन लोग के लिए वी आर ट्राइंग टू क्यूरेट अ कोर्स स्पेसिफिकली ऑन यूट्यूब जिससे कि उनको भी हेल्प मिले. और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे अपनी ओपिनियन बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, जो लोग अभी LL.B में हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है. कोई भी हो सकता है, इट कुड बी एनी कमर्शियल लॉ,
इट कुड बी सिविल, क्रिमिनल, कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि आपको पढ़ना है। दूसरी बात, हम लोग ऑल्सो जो हमारे लॉ ऑफिसर के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी कोर्स क्यूरेट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा अभी IBPS SO का एग्जाम 26 को उसका प्रीलिम्स है। सो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, अनअकैडमी का जुडिशरी चैनल ही इसके लिए भी सब क्लासेस और सेशंस लेके आएगा, और वो सेशंस मेरे साथ ही होंगे। सो अब हम जरा चलते हैं अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। सो ऑल द बेस्ट, अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मैं आपको प्लस आई वुड आल्सो लाइक टू, मैं सारे ही क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी लेके आई हूँ कि उस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों होगा। द टेस्ट इज नॉट वेरी इजी, इट इज गोइंग टू बी अ बिट कंसेप्चुअल, एज हमने अभी बहुत सारे पेपर्स देखे, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो पहला क्वेश्चन है, considering the applicability of the Indian Evidence Act 1872 upon the affidavits, mark the incorrect statement. A. Filing of an affidavit of one's own statement in one's own favor cannot be regarded as sufficient evidence for any court on the basis of which it can come to a conclusion as regarded a particular fact situation. B. Affidavit is no evidence under Indian Evidence Act, but it can be so used under Chapter 19 of CPC. C. An affidavit cannot be used in evidence even if any law specifically permits certain matters to be proved by affidavit. D. Any decree which is based on affidavit filed upon any evidence and that decree should be treated as nullity. So आपको question, आपको incorrect statement इसमें से mark करना है. Considering the application, the incorrect statement in this question is C. C. So C correct answer है, but C is the incorrect statement. Now let's see why C is the incorrect statement. So एविडेंस एक्ट जो है वो आपकी एफिडेविट पे अप्लाई नहीं करती है, ठीक है। कोई भी एफिडेविट जो कोर्ट या ऑफिसर को दिया जाता है, although the evidence act does not apply specifically to affidavits, there is no doubt that affidavits are used as mode of proof, ठीक है। However, an affidavit can be used in evidence if any law specifically permits certain matters to be proved by affidavit. और C आपका कहता था an affidavit cannot be used in evidence even if any law specifically permits certain matters to be proved by affidavit. So ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर कोई स्पेसिफिक लॉ है वो अलाउ करता है किसी एफिडेविट का यूज, तो वो परमिट किया जाएगा, ठीक है। वो एविडेंस की तरह यूज हो सकता है, एविडेंस एक्ट में यूज हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The fact that the witness inimical towards the accused person, as he had made a complaint to the police that the accused person had attempted to kill him, A. It by itself would be a valid ground to discredit him. B. It by itself would not be a valid ground to discredit him. C. The testimony of witness may be rejected merely on the ground of being inimical to the accused person. D. Both A and C. So let's look at the question again. The fact that the witness inimical towards the accused person, as he had made a complaint to the police, that the accused person had attempted to kill him. A. It by itself would be a valid ground to discredit him. B. It by itself would not be a valid ground to discredit him. C. The testimony of witnesses may be rejected merely on the ground of being inimical to the accused person. D. Both A and C. इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओके, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो क्या अगर किसी की दुश्मनी है एक अक्यूज पर्सन से और वो उसका जो क्या कहते हैं उस ग्राउंड पे हम उसको डिस्क्रेडिट कर सकते हैं, तो आंसर इज नो, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर. इट बाय इटसेल्फ वुड नॉट बी अ वैलिड ग्राउंड टू डिस्क्रेडिट हिम. सो B इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. Testimony of inimical witness cannot be rejected merely on the ground of being inimical to the accused person. All right. So now let's move to the next question. Where in a situation
where in a suit relief claimed a declaration of title and possession of immovable property based upon title, suit will be governed by A. Article 65 of Limitation Act as possession is main relief. B. Article 58 of Limitation Act as declaration is main relief. C. Article 64 of Limitation Act as possession of is main relief based upon dispossession. D. Either A or B. आंसर बहुत ही सिंपल है इसका. देयर इज नॉट मच दैट यू हैव टू पुट योर ब्रेन्स इनटू. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए. आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एज पोजेशन इज मेन रिलीफ. ये इसका करेक्ट आंसर होगा. Wherein a suit relief claimed a declaration of title and possession of immovable property based upon title, suit will be governed by Article 65. अगर आपको टाइटल के बेसिस पे कोई भी सूट आप कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस पाने के लिए, तो उसका वो गवर्न होता है आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड ना कि आर्टिकल 64. आर्टिकल 64 आपका तब लगेगा जब टाइटल के बेसिस पे सूट नहीं है आपका. ओके. Now let's move to the next question. Summary trial by the magistrate of the second class is provided under which of the following? A. 260 CRPC, B. Section 261 CRPC, C. Section 262 CRPC, D. Section 263 CRPC. Go on, answer this question. इट्स अ बैरक बेस्ड क्वेश्चन. सीधे सेक्शन बताना है आपको. समरी ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? दिस इज बी. सेक्शन 261 CRPC. दिस इज बी. सेक्शन 261 CRPC. ओके. Section 261 provides for a summary trial by the magistrate of second class. Okay. Let's move to the next question. In a suit of specific performance of contract under Section 21 of the Specific Relief Act 1963, A. The plaintiff has the right to seek compensation instead of specific performance. B. The plaintiff has the right to seek compensation in addition or in substitution of specific performance. C. The plaintiff has no right to claim compensation in any circumstance after framing of issues. D. None of the above. In a suit for specific performance of contract under Section 21 of Specific Relief Act, इनमें से क्या सही होगा? The correct answer to this question is D. None of the above is the correct answer to this question. Okay. Section 21 Specific Relief Act अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा none of the above is the correct answer. Now let's move to the next question. A surgeon who knows that a particular operation is likely to cause the death of Z who suffers from a painful complaint still performs the said operation without any intention to cause Z's death and in good faith intending to benefit Z. However, Z dies subsequently. Since A had no malified intention and acted in good faith for Z's benefit, thus A has not committed any offense and he is exempted from any criminal liability by virtue of A. Section 87 IPC, B. Section 88 IPC, C. Section 89 IPC, D. Section 90 IPC. It's a illustration. ये एक section का illustration है. So direct बैरक का question है ये. The correct answer to this question is B. This is section 88 of IPC. ये section 88 of IPC का illustration है. Okay.
सेक्शन 88 आईपीसी कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट. Okay, for person's benefit. Let's move to the next question. Section 195A of the IPC is related to A. Security of witnesses, B. Security of victims, C. Threatening any person to give false evidence, D. Perjury. The correct answer to this question is C. C is the correct answer to this question. Section 195A of the code deals with the offense of threatening any person to give false evidence, again directly from the Bare Act. Next question. A lease of immovable property for manufacturing purposes shall be deemed to be a lease from year to year terminable by dash notice expiring with the end of a year of tenancy. A. 15 days, B. 1 month, C. 6 months, D. 12 months. The correct answer to this question is C. 6 months is the correct answer to this question. Alright, you have to refer section 106 of TPA for this. You can refer section 106 of TPA for this. Now next question. In the case of gift, if the donee dies before acceptance of gift, such a gift becomes void. It is provided under A. Section 122 TPA, B. Section 123 TPA, C. Section 126 TPA, D. Section 127 TPA. In the case of gift, if the donee dies before the acceptance of gift, such a gift becomes void. It is provided under Section 122 TPA. Section 122 transfer of property talks about this. Okay, Section 122. Question number 10. Res judicata is A. Rule of procedure, B. Substantive right, C. Rule of evidence, D. Both A and C. Res judicata is A. Rule of procedure, B. Substantive right, C. Rule of evidence, D. Both A and C. Res judicata is rule of procedure. A is the correct answer. A is the correct answer for this question. Res judicata is a rule of procedure. Res judicata is a rule of procedure. Article 358 provide, this is what you have to see here. So, res judicata is a rule of procedure. Okay. Now, next question is, Article 12 defines the term state as to include A. The government and parliament of India, executive and legislature of the union, B. The union, the government and the legislature of each state, that is executive and legislature of states, C. All local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India, D. All of the above. The correct answer to this question is D. D is the correct answer to this question. Article 12 में सारी बातें लिखी हैं. Question number 12. Special provision for women and children has been laid down under which clause of Article 15? Question is, special provision for women and children has been laid down under which clause of Article 15? A. Clause 1, B. Clause 2, C. Clause 3, D. Clause 4. The correct answer to this question is C.
Correct answer to this question is C, that is 15(3) talks about special provision for women and children. इसके बारे में बात करता है Article 15 Clause 3. Okay, now Article 15 Clause 3 states that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Now, question number 13. A filed a suit against B for declaration of title. A bases his claim on a sale deed. Here, A, sale deed is original evidence. B, sale deed is documentary evidence. C, sale deed is oral evidence. D, sale deed is original and documentary evidence. Question को वापस से देखते हैं. A filed a suit against B for declaration of title. A bases his claim on a sale deed. Here, A, sale deed is original evidence. B, sale deed is documentary evidence. C, sale deed is oral evidence. D, sale deed is original and documentary evidence. The correct answer to this question is D. Sale deed is original and documentary evidence. ओरिजिनल एविडेंस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स प्रूव्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. जो चीज के बारे में आप, जिस चीज को आप प्रूव करना चाहते हैं, जब उसी चीज को आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो एक ओरिजिनल एविडेंस है. सो क्वेश्चन था, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल. A bases his claim on a sale deed. Sale deed is a original and of course it is a deed, so it is also a documentary evidence. Let's move to the next question. A fact is said to be disproved when A, the court believes that the fact in question does not exist. B, the court believes the non-existence of that fact from the standard of man of ordinary prudence. C, both A and B. D, none of the above. Again, the question is directly from the Bare Act. The correct answer to this question is C. Both A and B is the correct answer to this question. Okay, both A and B is the correct answer to this question. The fact is said to be disproved when A, the court believes that the fact in question does not exist. B, the court believes the non-existence of that fact from the standard of man of ordinary prudence. और ये हमें disproved की definition जो है वो मिलती है section 3 of Indian Evidence Act में. Okay, now let's move to the next question. To constitute an offence under which of the following provisions the demand of dowry by the accused is necessary? First, Section 304A IPC. 2. Section 498A IPC. Third, Section 304B IPC. Now you have to choose the most appropriate response in this. A says only 3 is correct. B says only 2 and 3 are correct. C, only 1 and 2 are correct. D, all 1, 2 and 3 are correct. क्वेश्चन ये है कि एक इनमें से कौन से ऑफेंस के कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए डिमांड ऑफ डाउरी इज अ नेसेसिटी, एंड द आंसर इज प्रीटी इजी. द आंसर इज ए. व्हाई द आंसर इज ए इज बिकॉज 304B talks about dowry death. So demand of dowry is mandatory when it comes to dowry death. In 498A and 304A, demand of dowry is not a necessity. Section 304B deals with the offence of dowry death. In order to constitute this offence, there must be any demand of dowry from the married woman by her husband or any other relative prior to her death. Question number 16. A agrees to sell a piece of land to B. B pays the agreed price, but A refuses to execute the transfer deed.
A is ready and willing to compensate B for any loss arises due to non-performance. Here, B can seek specific performance in court. B can compel specific performance through court. C, none of the above. D, both A and B. The correct answer to this question is D. D is the correct answer. Both A and B is right. B can seek specific performance in court and also B can compel specific performance through court. तो ये दोनों ही बातें सही हैं इस केस में. Alright, और ये सेक्शन 10 से हमें पता चलता है. ये हमें सेक्शन 10 से पता चलता है. Now you have to mark the correct statement. Statements बहुत लंबे लंबे, इनको ध्यान से पढ़ते हैं. A कहता है, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B CRPC shall not be used for any purpose. B, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statement or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall be used for any purpose. Good afternoon. C, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of chapter 21A of the CRPC. D, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements of facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall be used for any other purpose except for the purpose of chapter 21A of CRPC. आपको मार्क करना है correct statement. You have to mark the correct statement in it. Okay? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? अगर आप स्टेटमेंट सी देखें तो कहता है notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the statements or facts stated by an accused in an application for plea bargaining filed under section 265B shall not be used for any other purpose except for the purpose of chapter 21A of the CRPC. Okay, so C is the correct answer in this question. C is the correct answer in this question. और आप देख सकते हैं section 265K provides for statements of accused not to be used. Okay, now let's go to question number 18. In an examination of the accused under section 313 of the CRPC 1973, A, adverse inference can be drawn if he remains silent. B, adverse inference shall be drawn, ऊपर में can था, इसमें shall है. Adverse inference shall be drawn if he remains silent. C, adverse inference can be drawn if he remains silent in some cases. D, adverse inference cannot be drawn if he remains silent as it will be violation of his right to remain silent. The correct answer to this question is C. इसमें तो बोल दिया can never be drawn, ये तो सच ही नहीं है. It can be drawn, shall be drawn, ये भी सच नहीं है. कोई mandate नहीं है that it shall be drawn. Adverse inference can be drawn if he remains silent in some cases. Yes, it can be. It depends on the court. और ये गलत है कि adverse inference cannot be drawn if he remains silent as it will be the violation of his right to remain silent. No, adverse inference जो है वो हो सकता है. स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर मोहम्मद 2000 का जो केस है,
ये सारे के और जो बाकी केसेस लिखे हैं, इन सारे केसेस में कहा गया था कि एडवर्स इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन इफ वी रिमेन साइलेंट इन सम केसेस वेयर ईच लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस आर अनब्रोकन एंड पॉइंट्स टू द अक्यूज्ड एंड ही कैन नॉट फर्निश एन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग सच एविडेंसेस अगेंस्ट हिम, हिज साइलेंस और डिनायल can be justly used to draw an adverse inference. So adverse inference अगर आप 313 के एग्जामिनेशन में शांत हो जाते हैं तो adverse inference जो है वो definitely draw किया जा सकता है. Now let's move to the second last question of today. Mark the incorrect statement. A. Police officer cannot file closure report merely on the ground that informant has not provided the documents proving the guilt of the accused. B. Fact of amicable settlement can be relevant factor for purpose of reducing quantum of sentence. C. Petition under section 482 CRPC filed by a person unconnected with proceedings shall be entertained by the High Court. D. Person who is no way connected with proceedings cannot be entertained by the High Court. मार्क क्या करना है? हमें मार्क करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. We have to mark the incorrect statement in this, and the incorrect statement in this is C. C is the incorrect statement, so C will be the right answer. Petition under section 482 CRPC filed by a person unconnected with proceeding shall be entertained by the High Court. ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर आप अनकनेक्टेड हैं प्रोसीडिंग से तो आप 482 का पेटिशन नहीं फाइल कर सकते और आपके पेटिशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा बाय द हाई कोर्ट. सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये केस भी है एक संजीव तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2020. सेक्शन 482 सीआरपीसी फाइल्ड बाय पर्सन अनकनेक्टेड. इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई पर्सन अनकनेक्टेड है विद द प्रोसीडिंग्स और वो क्वॉश कराना चाह रहा है प्रोसीडिंग्स को 482 में, तो वो ऑर्डिनरली एंटरटेन नहीं की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इन लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन परविंदर कंसाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020, appeal filed by victim under section 372 of CRPC seeking enhancement of sentence is A. maintainable, B. non-maintainable, C. discretion lies in the court, D. none of the above. The correct answer to this question is not maintainable. इस केस के डिसीजन के हिसाब से ऐसी अपील 372 में करना नॉट मेंटेनेबल होगी. सो आप ये केस को देख सकते हैं परविंदर कंसाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2020. इसमें अपील फाइल की गई थी विक्टिम के द्वारा अंडर सेक्शन 372 फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस और इस केस में कहा गया था कि इट इज नॉट मेंटेनेबल. सो दीज वर द 20 क्वेश्चंस जो हमारी मिक्स बैग सीरीज में थे. आज हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया है. We'll meet next Friday with more of such questions. Till then, take care, and if you encounter any doubt, you can always ask it in the Telegram channel. Before you leave, just like and share the session and press the bell icon and subscribe to the channel as well. Thank you so much. Have a very good day.